So hi students, as we were doing the solution for IPPB questions, the questions for India post-payment bank paper. So hopefully if there's an exam this year as well, so you can apply for the same, and so you should be practicing for the same as well. And it's more or less of the similar pattern as the bank questions. So basically कल आपको रीजनिंग सेक्शन का solution मिल गया है. Today we'll be going for the solution of English section. So let us move on to the section directly. So we have, as you know, there are 30 questions. So we have 30 questions, and so as you see, there is a passage. Read the following passage carefully. So since इस बार से जैसे SBI clerk में आपके sectional paper का sectional timing का टाइमिंग दिया गया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम से सारे ही पेपर्स में आपके सेक्शनल टाइमिंग हो, तो उस केस में आपको कंप्रीहेंशन करना चाहिए. बट इफ यू आर नॉट गिवन अ सेक्शनल टाइमिंग एंड देयर इज अ क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड ऑफ 60 minutes, then I suggest you should not go for these questions. Rather you should skip these questions and do only the vocab part of these questions. जैसे 2-3 questions एंटोनिम सिनोनिम से जो आएंगे उसको अटेम्प्ट करिए एंड बाकी इस पे मत करिए, क्योंकि दैट वुड बी लाइक टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम. So let us move forward. So we have read the following passages carefully, and the questions I'm talking about the PO sections, okay? So read the following passages carefully and the questions given below it. Certain words, phrases are given in bold to help you locate them while answering some of the questions. China's rising power is based on its remarkable economic success. Shanghai's overall economy is currently growing at around 13% per year, thus doubling in size every 5 or 6 years. Every year, there are startups, innovations, and young entrepreneurs hungry for profits. In a series of high-level meetings between Chinese and African officials, the advice that the African leaders received from the Chinese was sound and more practical than they typically get from the World Bank. Chinese officials stressed the crucial role of public investments, especially in agriculture and infrastructures, to lay the basis for private sector-led growth. In a hungry and poor rural economy as China was in the 1970s and as most of Africa is today, a key starting point is to raise farm productivity. Farmers need the benefits of fertilizers, irrigation and high yield seeds, all of which were a core part of China's economical takeoff. Two other critical investments are also needed: roads and electricity, without which there cannot be a modern economy. Farmers might be able to increase their output, but it won't be able to reach the cities, and the cities won't be able to provide the countryside with inputs. The government has taken pains to ensure that the electricity grids and transportation network reach every village in China. China is prepared to help Africa in substantial ways in agriculture, road, power, health and education. And that is not an empty boast. China's leaders are prepared to share new high-yield rice varieties with the African counterparts and all over Africa. China is financing and constructing basic infrastructure. This illustrates what is wrong with the World Bank. The World Bank has often forgotten the most basic lessons of development, preferring to lecture the poor and force them preferring to lecture the poor and force them to privatize basic infrastructure, which is untenable, rather than to help the poor to invest in infrastructures and other crucial sectors. The bank's failure began in the early 1980s when, under the ideological sway of then American President and British Prime Minister, it tried to get Africa and other poor regions to cut back or close down government investment and services. For 25 years, the bank tried to get governments out of agriculture, leaving impoverished peasants to fend for themselves. The result has been a disaster in Africa, with farm productivity stagnant for decades. The bank also pushed for privatization of national health systems, water utilities, road and power networks, and has grossly underfinanced these critical sectors. This extreme free market ideology, also called structural adjustment, went against the practical lesson of development success in China and the rest of Asia. Practical development strategy recognizes that public investment in agriculture, health, education and infrastructures are necessary complements to private investment.
The World Bank has instead wrongly seen such vital public investment as an enemy of private sector development. Whenever the bank's ideology failed, it has blamed the poor for corruption, mismanagement, or lack of initiative. Instead of focusing its attention on helping the poorest countries to improve their infrastructure, there has been a crusade against corruption. The good news is that African governments are getting the message on how to spur economic growth and are creating crucial help from China and other partners that are less wedded to extreme free market ideology than the World Bank. They have declared their attention to invest in infrastructure, agriculture, modernizations, public health and education. It is clear the bank can regain its relevance only if it becomes practical once again by returning its focus to financing public investments in priority sectors. If that happens, the bank can still do justice to the bold vision of a world of shared prosperity that prompted its creation after World War II. So the topic of the PESIS asked in the exam was based on World Bank report on African economy. So basically you have understood कि यहाँ पे World Bank report को बोला गया है कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो and whatever. So they for an example China की economy को cite किया गया है यहाँ पे. So we'll go directly to the questions. The author's main objective in writing the passage is to make a case for the closure of the World Bank since it promotes US interests over those of other countries. No, this is not the correct option. So next we have illustrates how China can play a more concrete role in Africa. No, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला गया है. So let us see the rest of the options as well. We have option number 3, criticizing the World Bank for playing a crucial role in China's development but neglecting Africa. No, World Bank did not play a crucial role in the development of China. Okay. Recommended that China adopt the guidelines of the World Bank to sustain growth. No, yeah, ये भी नहीं है. Okay. Use China's success as an example of the changes required in World Bank ideology. तो यही बोला गया है आपको कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि चाइना के जो सक्सेस है उसको एग्जाम्पल लेते हुए we should do the changes that is required in the World Bank ideology. Okay. Next we have what advice have African leaders received from the Chinese counterparts. Okay, उनको क्या advice मिला है. So let us see. We have focus primarily on the innovation startups and urban development. नहीं, ये नहीं बोला गया है. You should not focus on innovation startups and urban development. You should focus on the rural parts. Okay, you should focus on growth of the farmers to ensure all citizen benefits from economic development. Investment in crucial sectors should come from the government, not the private sector. तो यही बोला गया है आपको. राइट. नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव एग्रीकल्चरल आउटपुट थ्रू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये बोला गया है कि आपको गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्रीज करना है. तो दोनों बी एंड सी करेक्ट है, लेकिन इफ यू सी देयर इज नो ऑप्शन बोथ बी एंड सी, सो योर आंसर वुड बी ई, दैट इज नन ऑफ दिस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 73. What effect had the World Bank policy had on African nations? जो World Bank policy है उनका जो effect था वो क्या था? The African government has restricted private sector investment in agriculture. No, this was not the effect. Next we have Africa had focused more on health and education rather than on agriculture. Okay. सो ये भी ऐसे नहीं कंपेयर किया गया है कि ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ज़्यादा फोकस हुआ था रेदर देन एग्रीकल्चर. इसके बारे में वी आर नॉट लाइक वेरी श्योर. नेक्स्ट वी हैव द एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिस कंट्री इज नॉट एज प्रोडक्टिव एज इट कुड बी. बोला गया है आपको बार बार कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है, वो इतना प्रोडक्टिव जितना होना चाहिए था उतना नहीं है. सो यही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 74. What is the difference in the Chinese and World Bank approach to development? Unlike the World Bank, China favors the public sector and restricts private sector participation in crucial sectors. No, ये नहीं है, right? Next, contrary to China's strategy, unlike the World Bank, China favors. हाँ, यही बोला है कि वो लोग क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए. तो यही आपके होगा, राइट. लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रैदर देन द पब्लिक सेक्टर. सो आपके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 75.
Which of the following cannot be said about structural adjustment? तो structural adjustment क्या था? जो आपके वर्ल्ड बैंक का जो आइडियोलॉजी, फ्री मार्केट आइडियोलॉजी था, वो था. क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ वर्ल्ड बैंक्स फ्री मार्केट आइडियोलॉजी एडप्टेड बाय एशियन कंट्रीज. तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की फ्री मार्केट आइडियोलॉजी एशियन कंट्रीज ने अडॉप्ट नहीं किया था, दे हैव अफ्रीकन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था. तो हम ये नहीं बोल सकते दिस इज नॉट ट्रू अबाउट structural adjustment. So this would be your correct option. Okay, option number A. Next question पे चलते हैं. We have question number 76. Which of the following is not true in the context of the passage? China's involvement in Africa so far has been restricted to advising its leaders. तो ये नहीं है राइट, ये चाइना ने नहीं किया था राइट. वो लोग दिस इज नॉट ट्रू. दे वर आल्सो into investing, they were also helping them as well, okay, with investment and with also they high yield जो rice production उसके साथ भी उसको ज़्यादा मतलब help कर रहे थे. Next, the World Bank was created by the US and Britain for the sole purpose for furthering their interest. नहीं, ये भी नहीं बोला गया है कि बस वही पर्पस था उनका, ये नहीं बोला गया है कहीं पे भी, तो ये आपका गलत है. नेक्स्ट, चाइना's economy was once in the same state as many African countries are today. तो यही बोला गया है आपको कि जो चाइना की इकोनॉमी एक टाइम पे था, अभी अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो वैसा ही है. ओके, सो ये अब हमारा ट्रू है, लेकिन बाकी दोनों आपका ट्रू नहीं है, तो आपका आंसर होगा ओनली बोथ ए एंड बी. ओके, next question, what is the author's optimistic? Why is the author optimistic about Africa's future? The World Bank has committed itself to invest huge sums in Africa's development. नहीं, कहीं नहीं लिखा है ये. Africa has decided to adopt a structural adjustment. नहीं, if they do that then already आपको बोला गया है कि वो लोग कर चुके हैं and बहुत ज़्यादा उनको लॉस हुआ है इसकी वजह से. नहीं होगा ये. Africa has committed itself to adopting China's strategy for economic growth. तो या उन्होंने समझा है. लास्ट में आपको लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि थैंकफुली अफ्रीका हैज अंडरस्टूड कि क्या क्या कैसे करना है, क्या करना है, एंड दे हैव अडॉप्टेड चाइना's पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 78. What advice is the author given in the World Bank? Given the World Bank. So क्या advice क्या है? Support China's involvement in developing Africa? नहीं. Reduce the influence of the US and Britain in its functioning? नहीं, ये भी नहीं बोला गया है. Adopt a more practical ideology of structural adjustment? तो ये नहीं बोला गया. Let us also move. Change its ideology to one encouraging both public and private sector in basic infrastructures. Okay. Next we have focus on fighting corruption. नहीं, ये नहीं बोला गया है राइट. तो यहाँ पे अगर इफ यू सी द ऑप्शंस, आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, इफ यू सी यू शुड जो सपोर्ट चाइना's इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपिंग अफ्रीका, दिस सिम्स मोर क्लियर राइट. यही ज़्यादा है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 79 से 80. सी गाइस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वोकैब्स के बेस क्वेश्चन आएंगे कम्प्रीहेंशन में, तो इनको आपको वैसे भी कर सकते हो. जैसे इम्प्रोवराइज, चूज अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज. इम्प्रोवराइज, अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरा क्वेश्चन पूरा तो नहीं पढ़ना है. यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे आपका सेंटेंस भी है. For 25 years, the bank tried to get government out of agriculture, leaving impoverished peasants to fend for themselves. अब देखिए impoverished का मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा poor हो, ठीक है, make something very poor, okay, that is the meaning of impoverished. So what would be the opposite in meaning? अब देखिए innovate का अगर मतलब है तो innovate का मतलब होता है exhaust या फिर fatigue, okay, exhaust या फैटिक. तो डेफिनेट है इनका ऑपोजिट नहीं होगा. इम्पॉपुलराइज का मतलब होता है मेक समथिंग पुअर. ओके, इंडिजेंट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब पुअर है. ओके, समथिंग दैट इज वेरी पुअर. ओके, क्लियर. तो ये होगा, इनका मीनिंग होगा इंडिजेंट, पुअर एंड नीडी. नेक्स्ट वी हैव पेनूरियस. पेनूरियस इज समवन हु इज एक्सट्रीमली पुअर. ओके, तो डेफिनेट है ये सिनोनिम्स है. इंडिजेंट, पेनूरियस. डेस्टिट्यूट इज आल्सो पुअर. समवन हु इज पुअर इज नोन एज डेस्टिट्यूट, तो ये भी नहीं होगा.
ऑपुलेंट इज ऑस्टेंशियसली लैविश, या फिर जो बहुत ही ज्यादा रिच है, दैट इज नोन एज ऑपुलेंट, राइट? ऑस्टेंशियसली कॉस्टली or luxurious or ostensibly lavish. Okay, lavish is also the same meaning as. So your correct option would be opulent. Okay, impoverize का जो opposite है वो है opulent. Next we have crusade. क्रूसेड का मतलब है आपका किसी कुछ बहुत ही ज़्यादा विगोरस कैंपेन करना. ओके, विगोरस कैंपेन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, उसको बोलते हैं हम क्रूसेड. ओके, नेक्स्ट आपके ऑप्शन है ऑफेंसिव, तो डेफिनेट है नहीं होगा. सॉर्टी का मीनिंग होता है अटैक मेड बाय एन एनिमी या फिर मेड बाय ए पर्सन हु इज इन ए डिफेंस फॉर्म, मतलब खुद को डिफेंड कर रहे थे कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अटैक कर दिया, तो दैट इज नोन एज सॉर्टी. ओके, नेक्स्ट ड्राइव तो दैट एनीवेज नहीं होगा. ऑनस्लॉट का मतलब है एट फिजिकली अब्यूज, ज़्यादा अब्यूज करना जिसको बोलते हैं अब्यूज करना या फिर ऑनसेट करना, तो दैट इज नोन एज ऑनस्लॉट. ओके, असॉल्ट करना या फिर अटैक करना इज नोन एज ऑनस्लॉट. नेक्स्ट वी हैव फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन इज लाइक डिफेंस करना, कि कोई अगर आपको अटैक कर रहा है तो खुद को डिफेंस करना जो होता है दैट इज फोर्टिफिकेशन. सो क्रूसेड होता है अटैक करना, टू अटैक समथिंग, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे पॉलिटिकली जो क्रूसेड करते हो या फिर कैंपेन करते हो दैट इज नोन एज क्रूसेड, तो उसको डिफेंस करना दैट इज फोर्टिफिकेशन. तो सबसे ज़्यादा क्लोज जो ऑपोजिट मीनिंग है वो है होगा आपके फोर्टिफिकेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 90 एंड रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द नंबर ऑफ द पार्ट इज द आंसर. इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज ई. The blind's life is really very miserable because they cannot see. अब देखिए, यू नेवर से ब्लाइंड्स लाइफ. ओके, सो इवन दो दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स बट यू हैव टू, यू कैनॉट से, यू कैनॉट यूज पॉजिटिव केस फॉर दिस blind. Okay, so you have to say the life of the blind. Okay, the blind's life is very incorrect, so you have to say the life of the blind. Okay, clear? You have to say the life of the blind. Okay, is really, तो एरर कहाँ है? ए में. Next we have a cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye. With the naked eye, right? यहाँ पे आपके पास जो ये है ये बहुत ही particular है, naked eye से नहीं देख सकते, तो you should have used the naked eye. Okay. Next, it is true that I made the chief minister at one of my friends' houses. ठीक है, तो ये गलत है. You should have written at the house of one of my friend. Okay, हम ऐसे इसको use नहीं कर सकते. Okay, next. She asked him what it was that made him so much stronger and braver than any man. अब देखिए, पहले भी आपको बोला जा चुका है जब आपने डिग्री ऑफ कम्प्रीहेंशन किया था कि अगर इफ लाइक मैन से मैन का ही कंपैरिजन हो तो उसमें अगर एनी मैन बोला जाए तो उसमें वो भी आता है, तो इस केस में ये तो गलत हो जाएगा. तो अगर सेम ही सेक्शन ऑफ पीपल है तो उसमें एनी अदर मैन का यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे एनी अदर होगा, मतलब उसके अलावा बाकियों से. ठीक है, लेकिन अगर सी एक गर्ल को कंपेयर कर रहे हैं किसी मैन के साथ, देन यू कैन यूज एनी मैन. क्लियर? सो यहाँ पे एनी अदर मैन होगा क्योंकि ही को कंपेयर कर रहा है कि ही इज ऑल्सो ए मैन एंड बाकी मैनों से उसको एक्सक्लूड करना है, तो यू हैव टू यूज अदर. ओके, नेक्स्ट. द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन, माइक्रोवेव एक्सेट्रा हैव नॉट बीन विदाउट एनी इफेक्ट. नाउ यू सी, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? इन्वेंशन. ठीक है, इन्वेंशन. तो इन्वेंशन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर ही यूज होगा, तो यहाँ पे हैज होगा ना कि हैव. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग्स रूफ. आप बार बार आपको बोला गया है कि किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम पॉजिटिव केस का यूज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना था यहाँ पे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. Okay, next,
The economic structure of Indian household is such that girls are required to help in household work and also perform their course. देयर कोर्स परफॉर्म कोर्स नहीं, डियर कोर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अदर कोर्स. ओके, डियर जो है वो सही से फिट नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए कि डियर की जगह अदर आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वी हैव क्वेश्चन नंबर 88. सो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन. ओके, क्लोजिंग द डोर्स टू ए फॉरेन सिटीजन. अब देखिए क्लोजिंग द डोर्स जो है वो एक फ्रेज है एंड इसके साथ आपका आना चाहिए था preposition फॉर, ना कि टू. ओके, क्लोजिंग द डोर्स फॉर ए फॉरेन सिटीजन seeking employment in India. The High Court on Thursday ruled that it is not a foreign national's fundamental right to get an employment visa in the country. तो एरर कहाँ है? ऑप्शन ए में. Next, demand for diesel cars, which has been on the rise for the last few years, may dip as the government is increasing the price of the fuel, bringing it closer to that of petrol. No error. So basically यहाँ if you see clearly also देखिए demand है तो has है, सही है. Has been for है तो has been है, वो भी सही है. May dip as the government, may है, ठीक है. फिर इस इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द फ्यूल, डीजल के बारे में बोला है तो दा फ्यूल लगा दिया, सही है. ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू दैट ऑफ पेट्रोल, ये भी सही है. तो कहीं पे भी एरर नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नो एरर. क्लियर. नेक्स्ट, नॉट ओनली द वॉज द एक्ट्रेस ओवर द मून एज विनिंग एन अवार्ड, एज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑन विनिंग एन अवार्ड, राइट. बट वॉज ऑल्सो डीपली touched by the support she got from the industry. तो यहाँ पे आपके करेक्ट होना चाहिए on winning an award, ना कि as winning an award. Clear? Next question पे चलते हैं सीधा 91 से लेके 100. We have in the following passages there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passages and again each 5 words is suggested, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word. So basically आपके close test है. The capitals Apocalypse, the choking smoke that descended on Beijing in the winter of 2012 and 13 galvanized public opinion and dashed the government. अब देखिए क्या होना चाहिए. Words देखते हैं. Let us see the words. We have options. Frightened, spoke, startled, pleased and hesitated. देखिए for frightened, spoke, startled, frighten the government नहीं, right. नेक्स्ट है आपके startle, surprise. नेक्स्ट सरप्राइज भी नहीं है, सरप्राइज भी है, साथ में आप frighten भी है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका spooked. ओके, SPOOKED. spooked का मतलब है unnerve. जैसे फ्राइटन हो जाना, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में नहीं समझ में आना. ठीक है. Next, the strange thing is though that information about air pollution, how extensive it is, how much damage it does, has long been sketchy, dash mostly on satellite data or computer models. तो let us see क्या होना चाहिए. Seems like कि यहाँ पे base वगैरह कुछ होना चाहिए. So if you see the option situated on, station on, based on, enacted on and disambiguated. Enact का मतलब है कि आप किसी मतलब किसी भी चीज को जैसे एक्ट करना. ओके, डिसएम्बिगुएट का मतलब है कंफ्यूजन को दूर करना है. ठीक है. तो लेट अस सी वी हैव. सो यहाँ पे इफ यू सी द ऑप्शंस, सबसे जो करेक्ट होगा वो होगा based mostly on satellite data or computer models until now. Okay, dash to the outcry, the government set up a national year reporting system. So let us see the options as well. So we have countering to the outcry, retorting to the outcry, answering to the outcry. Answering हाँ सही है, लेकिन the word is not very appropriate for the sentence. Greeting नहीं है, सही है. Next, responding. Responding is very correct because answering का मतलब होता है कि you are answering, लेकिन responding मतलब उनको respond करना. So बहुत ज़्यादा difference है यहाँ पे. So your correct option would be responding, ना कि answering. Okay, next, responding to the outcry. The government set up an international year reporting system which now has almost 1,000 monitoring stations pumping out hourly reports on 6 pollutants including sulfur dioxide, ozone and the main
डैश पार्टिकुलेट मैटर, क्या होना चाहिए? फ्यूजिटिव नहीं, फ्यूजिटिव का मतलब है जो भागते रहे कोई, मतलब समवन हु हैज डन ए मिस्टेक एंड ही इज ऑन द he has been eloping. Okay, felon is someone who has committed a grave mistake. Okay, ये भी नहीं होगा. Miscreant भी someone who has broken the law is known as miscreant. Okay, culprit is something because the reason for which this thing has been created. तो यहाँ पे culprit होना चाहिए, right? The main culprit particular matter less than 22.5 microns in diameter or PM 2.5. These are tiny particles which lodge in the lungs and dash respiratory disease. क्या होना चाहिए? Causes वगैरह होने चाहिए. So if you see here, hamper नहीं, cause या definitely होना चाहिए cause, lead नहीं, result नहीं, cause होना चाहिए 95 का cause. ठीक है? These six are the main cause of local pollution but have little to do with climate changes since they do not include carbon dioxide, the main greenhouse gases. Scientists from Berkeley Art, a not-for-profit foundation in America, have dashed through their recent cloud of data. Have dashed through मतलब have looked through, right? Seen का मतलब होता है कि fish को पकड़ना with the help of a seine. So यहाँ पे definitely नहीं है. Drained over, definitely drained over मतलब मतलब you have to like drain through is like जितना भी हमारे पास ये है whatever energy we have drained through everything. Okay, next we have, so basically ये भी fit नहीं हो रहा. carried through भी सही नहीं है. ट्रॉल्ड थ्रू अगर हम बोले तो ट्रॉल थ्रू का मतलब होता है टू लुक थ्रू. तो यही आपके करेक्ट आंसर होगा, ट्रॉल थ्रू. ओके, ट्रॉल TRAWLED का मतलब होता है लुक थ्रू. Trawl through this recent cloud of data for the 4 months to early August 2014 sift out the bits that are manifestly wrong. Reading where the dial seems to be stuck for. So we'll see the options as well. Stuck for instance and emerge the most. Okay, let me change so that we can see the options as well. Okay, so yeah, we can see the options right now. Okay, and the most detailed and up-to-date pictures of Chinese air population so far. Pollution is sky high. That's in China. तो क्या होना चाहिए? All over in China, nowhere in China, around China, in China, definitely not. Ubiquitous in China, nahi. Everywhere in China. So basically sky high everywhere in China would be your correct option. Okay, next we have everywhere in China. Okay, next we have everywhere. Some 83% of Chinese are dashed to year that are exposed. Definitely exposed ही होना चाहिए, तो exposed would be a correct answer. Obscured, exhibit, block, if conceal isn't the correct option. In America would be deemed by the Environmental Protection Agency either to be unhealthy or unhealthy for sensitive groups. Almost half the population of China experience levels of PM 2.5 that are above America's highest threshold. So yeah, this is correct. Above ही होता है. Next, that is even dash than the satellite data had suggested. Even क्या? Worse. Better तो नहीं होगा. This is not going with the sentence. Even worse, right? Worse would be the correct formation. So I hope it is not very difficult. I hope आपने सारे questions के answers कर लिए होंगे. And if अगर नहीं हुआ था कोई, तो I hope अभी आपको समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कुछ भी कहीं पे भी doubt है, then you can leave us a comment or also you can write to us. So thank you people. Stay connected. We'll soon be bringing you the quantity aptitude section solution for this paper.